And now we are talking about the hydraulic pump, right? So hydraulic pump होता क्या है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए पंप, हाइड्रोलिक पंप जो होता है यूजुअली ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, जो हाइड्रोलिक पंप होता है. So the combined pumping and the driving motor unit is known as hydraulic pump. What? The combined pumping and driving motor unit is known as hydraulic pump. If I will tell you into the very usable form, so you can tell them. And hydraulic pump is what? Usually driven by electric motor. Okay? और आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह का होता है, किस तरह का इलेक्ट्रिक मोटर होता है? लार्ज एसी इंडक्शन मोटर होता है, और यू कैन से आईसी इंजन होता है, कह सकते हैं आप. ओके, अब आपको पता है इसका ऑपरेटिंग, मैंने बताया था कि जो टिपिकल फ्लूइड प्रेशर होता है जो किससे जनरेट होता है, पंप से जनरेट होता है. वो हेवी इक्विपमेंट, जितना भी हेवी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होता है उन सबों में, या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होता है उन सबों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. सो ऑफ कोर्स जो उनका प्रेशर रेंज होता है वो होता है 6.9 मेगा पास्कल से 20.7 मेगा पास्कल तक. समझिए? So you just keep in the mind the hydraulic pump takes the hydraulic fluid and mostly oil use करते हैं from the storage tank and deliver it to the rest of the hydraulic circuit. So in general, if you are talking about the speed of the pump, which is constant, and the pump deliver an equal volume of the oil in each revolution. ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएटिंग oil नहीं प्रोवाइड करता है. It must deliver the equal volume of oil into every cycle. So the amount and direction of the fluid flow is controlled by what? Some external mechanism. The amount and the direction of the fluid flow is controlled by some external mechanism. That is what I already told in the previous slide. That is the control valve, and control valve may be there are 3 types: direction control valve, flow control valve, and the pressure control valves, right? So just keep in the mind, in some of the cases the hydraulic pump itself is operated by servo controller motor, but it makes the system complex. उसके लगाने से सिस्टम क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. So the hydraulic pump are characterized by its flow rate, capacity, power consumption, drive speed, pressure delivered at the outlet, and the efficiency of the pump. If you are looking to select the hydraulic pump, you must keep those things in the mind. What are those things? That may be the flow rate, capacity, power consumption, drive speed, pressure delivered at the outlet, and the efficiency of the pump. So these are the associated parameters which may be known for what? Which may be known for the performance of the hydraulic pump. So the pumps are not 100% efficient. You must keep in the mind. Pumps are not 100% efficient. So the efficiency of the pump can be specified by 2 ways. What are 2 ways? One is the volumetric efficiency, and volumetric efficiency is what? A ratio of actual volume of fluid delivered to the maximum theoretical volume possible. Okay, and second is power efficiency, which is the ratio of output hydraulic power to the input mechanical or electrical power. So the typically efficiency of the pump may vary from 90 to 98%. So no one can attain 100%. Okay, so before going to discuss hydraulic pump types, I must tell you hydraulic fluid is selected to have some characteristics, and what characteristics we must have to keep in the mind. Okay, so that must be क्या होना चाहिए आपको पता है, previous class में मैंने discuss किया है. It must be the good lubrication. It must having the good lubrication which will prevent the wear in the moving equipment. होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Hydraulic fluid must have the good lubrication which will help us to prevent the wear in the moving equipment. Secondly, it must be the corrosion resistance, and thirdly, it must be the incompressible to provide the rapid response. That is what we are using the hydraulic fluid, which is having the better result than the pneumatics, because it is having the good accuracy to the entire process. So now, we are talking about the hydraulic pump classification of types. Okay, so we are having the centrifugal pump and the reciprocating pump. We are having the centrifugal pump or the reciprocating pump. Okay, centrifugal pump, I think you are familiar. You already have gone through in hydraulic system. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Centrifugal pump is nothing but you can say this is the hydrodynamic, or you can say the non-positive displacement pump. आप लोग पढ़े हैं ना? Okay, hydrodynamics और non-positive displacement. Yes sir, पढ़ा है.
ओके सो उसी उसी के एग्जांपल होते हैं ना जो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोपेलर पंप, both comes under the hydrodynamic or the non positive displacement pump, right? You know, although I already told you, although these pumps provides very smooth and the continuous flow, right? So but their flow output is reduced when the circuit resistance is increased. सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इसकी आउटपुट भी क्या हो जाती है, आउटपुट भी रिड्यूस हो जाता है. ओके so just keep in the mind there is a great deal of clearance between the what rotating and the stationary element. When resistance of the external system starts to increase, okay, in that case what you will get, some of the fluid slip back into the clearance space and they will cause the reduction into the discharge flow rate. उससे क्या होता है, डिस्चार्ज फ्लो रेट कम हो जाता है. ओके और स्लिपेज क्यों होता है, स्लिपेज क्यों होता है, स्लिपेज इज ड्यू टू द लो रेसिस्टेंस पाथ. इसके चलते क्या हो जाता है, स्लिपेज हो जाता है. सो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि द पंप फ्लो रेट डिपेंड्स नॉट ओनली द रोटेशनल स्पीड, द पंप फ्लो रेट डज नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन द rotational speed but also on the resistance of external system. This is not depends on the pump flow rate, the liquid discharge by your pump. Okay, so the pump flow rate depends not only the rotational speed, it also depends on the resistance of the external system. Okay, right? So that's what these type of pumps are used in the low pressure high volume flow application. इसीलिए जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है वो कहाँ यूज करते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है. विच इज वेरी फेमिलियरली आस्क्ड टू द इंटरव्यू कि कहाँ आप यूज करते हैं लो प्रेशर हाई वॉल्यूम फ्लो एप्लीकेशन. तो वहाँ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं. लो प्रेशर हाई वॉल्यूम फ्लो एप्लीकेशन, तो हमेशा ध्यान रखना वो हाइड्रोडायनेमिक और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है. और उस पंप का एग्जांपल क्या होता है, बताइए. उस पंप का एग्जांपल होता है सेंट्रीफ्यूगल और प्रोपेलर पंप. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल एंड द प्रोपेलर पंप उसका एग्जांपल होता है. ओके, दे विल ऑपरेटेड ऑन द लो प्रेशर हाई वॉल्यूम फ्लो एप्लीकेशन, राइट. और दूसरा आपको पता है, दूसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. इसका एग्जांपल आप बताएंगे? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोस्टैटिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तरह का जो पंप होता है दिस विल ऑलवेज इजेक्ट अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड. एक रिवोल्यूशन में, हर रिवोल्यूशन में फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड को इजेक्ट करता है. कहाँ पे, शाफ्ट पे, पंप के शाफ्ट पे. एक रिवोल्यूशन पंप के शाफ्ट पे हमेशा. यस शिवम तिवातिया. I was checking that. Okay. Now I'm talking about the hydrostatic और the positive displacement pump. हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोडायनेमिक और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और दूसरा क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक और द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. तो अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के पंप में हमेशा जो इंजेक्शन होता है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड का होता है. एक रिवोल्यूशन में, मतलब पंप शाफ्ट के एक रिवोल्यूशन में एक मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी का फ्लो होता है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी का फ्लो होता है. ओके, और दिस पंप्स आर द वेल सूटेड फॉर फ्लूइड पावर सिस्टम. फ्लूइड पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा यही पढ़े होंगे आप लोग. इफ यू हैव रिमेंबर्ड दिस पंप्स आर वेल सूटेड फॉर द फ्लूइड पावर सिस्टम. पढ़े हैं आप लोग? बिकॉज व्हाई इट इज सो, व्हाई सिद्धार्थ चौधरी इज एंटरिंग, व्हाई इट इज सो, बिकॉज यू नो द पंप आउटलेट फ्लो इज कांस्टेंट एंड इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम प्रेशर. ओके, पंप का आउटलेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है. द पंप आउटलेट फ्लो इज कांस्टेंट एंड डिपेंड ऑन सिस्टम प्रेशर. सो जस्ट you have remembered what are the example of positive displacement pump. If I will ask, you must tell. I think you all have gone through very properly. That is what the gear pump, vane pump and the piston pump. आप लोग पढ़े हैं गियर पंप, वेन पंप, पिस्टन पंप. You have gone through or not? Yes. Final year. I think in fluid system you have gone through, gear pump, vane pump, piston pump. You are able to recall or not?
Yes, sir. Okay, so I think Yes, sir. time is no more with us. This class is 10:10 or 10:05? 10:05, I think. Sir, 10:05. So okay. This may be the last slide from my side. Okay, so now we are talking about the centrifugal pump. Centrifugal pump. You know, centrifugal pump uses rotational kinetic energy to deliver the fluid. This is the diagram of centrifugal pump. This is the diagram of the centrifugal pump. This is the inlet pipe and this is the outlet pipe. This is the inlet pipe and this is the outlet pipe. Okay, so centrifugal and these are the casing of the centrifugal pump and these are the vanes. Okay, so centrifugal pumps uses the rotational kinetic energy to deliver the fluid, right? अब rotational energy कैसा होता है? Rotational energy typically comes from the engine, or you can say if you are using the electric motor, then it comes from the electric motor, right? So the fluid enter through the pump. See, the fluid enter the pump through the impeller along or the near to the rotational axis, right? Near to the rotational axis, accelerate into the propeller. This is the they will accelerate into the propeller and flung out to the peripheral by the centrifugal force. And you know what is centrifugal force? What is centrifugal force? In centrifugal pump, the delivery is not constant. Just keep in the mind. In centrifugal pump, if we are talking, delivery is not constant. Why these people are coming again and again? Okay, so just keep in the mind, in centrifugal pump, delivery is not constant and they will vary according to the outlet pressure. Okay, so these pumps are not suitable for the high pressure application and are generally used for the low pressure, high volume flow application. I already said you, low pressure, high volume flow application. So the maximum pressure capacity is limited to the 20 to 30 bar. Okay, and a specific speed range that will be vary from 500 to 10,000. Okay, so the most of the centrifugal pump are non-self-priming and the pump casing need to be filled with the liquid before the pump is going to be start. This is the same principle, this is the same type of principle we are using where? आप लोग pump set देखे हैं diesel engine. If somebody is from the village, they have seen the diesel engine. When we are going to fit the diesel engine into the sump or diesel engine from the pond or the tank, आप देखते थे उसके केजिंग में पानी भरना पड़ता था. We will mix the cow dung. We will mix a cow dung along with the water and put into the caging of the pump, and then we will start. Then only they will start. In rest condition they will not start. If you are familiar and have you seen those operations? Have you seen this? I think those who are from the village, they have seen those phenomena. This is very common phenomenon nowadays. So just keep in the mind how it is working. Okay, this is what we call it the self-priming. Okay, so just keep in the mind centrifugal pump. I already told you what I told you. I think you are familiar with this term centrifugal pump. I already told you this can operate only on this can operate only on the low pressure condition and high volume flow application. This type of pump is used into the low pressure, high volume flow application. Why it is so? Because it cannot deliver the constant outlet pressure. It cannot deliver the constant flow, and their outlet pressure is varying accordingly. Okay, so just keep in the mind just keep in the mind. सर इसमें हाँ बताओ. सर इसमें इनलेट पाइप जो है बीच में मतलब एक सेंटर के उसमें आते हैं जहाँ रोटेशन होती है एक्सेस पे. यस एक्चुअली जो इम्पेलर होता है, इम्पेलर उसको क्या करता है, थ्रो करता है. देखिए दीज आर द इम्पेलर्स वी आर हैविंग, और ये जब रोटेट करता है तो ये क्या करता है अकॉर्डिंगली वाटर को क्या करता है थ्रो. सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर. तो क्या करता है सेंटर से अवे फेंकता है बाहर टुवर्ड्स द केजिंग. ओके, और जब केजिंग पे फेंकता है सो तो अकॉर्डिंगली देखो जो आउटलेट पाइप देख रहे हैं यहाँ से वो एग्जिट होता है. So today itself I'm going to discuss. You will see the pressure range. Hydraulic is known for minimum 100 bar pressure, but here the operating pressure, you will see operating pressure is what? Here the operating pressure is only 20 to 30 bar.
that may be attended by pneumatic also. Pneumatic से भी हम 10 अटेंड करते हैं, right? So thank you all of you. Okay, thank you all of you. I'm going to discontinue my lecture right now. Okay.